A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And you know very well in the last video we started a new chapter of part B, class 11th accountancy. That is a financial statement of sole proprietorship with adjustment. So in today's video, firstly we discussed the summary of financial statement, which types of the account and statement should be prepared in the financial statement of sole proprietorship. Thereafter, we discussed a lots of adjustment which we will discuss in the upcoming videos. It means which kind of the adjustment should be included while we preparing the financial statement. उसकी एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से एडजस्टमेंट्स पे हमें फोकस करना है, और उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद देयर आफ्टर वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप including the such kind of the adjustment. Okay, so let us start the today's video. All the best. Summary of the financial statement of sole proprietorship. So let's make a summary of the financial statement of the sole proprietorship. So please note down in your copy and listen carefully. If you are talking about the financial statement of sole proprietorship, it includes the two types of the statement. The first one is a income statement, and number second is a positional statement. Okay, with the help of the income statement, organization wants to ability of the profit. It means ability to earn profit. यानी इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से कंपनी क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या पता करता है, अपनी प्रॉफिट की एबिलिटी. And with the help of the positional statement, organization or the sole proprietorship wants to their financial position. अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या पता चलता है, that is financial position. Okay, the next is very important कि सर इनकम स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं. दे आर बेसिकली टू स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करें, सो ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, दैट इज सेल्स एंड cost of goods sold. It means with the help of trading account we establish the relationship between the sales and cost of goods sold. Sales मतलब हमने goods कितने में sell किया, and cost of goods sold का मतलब होता है goods हमने कितने में manufacture किया, कितने में बनाया. So with the help of the sales and cost of goods sold, trading account gives the information about the gross profit or gross loss of the business. यानी हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, हम ये पता करते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट and gross loss with the all indirect expenses. You know very well business में कई तरह के indirect expenses होते हैं जो business के manufacturing activity से related ना होकर non manufacturing activities से related होते हैं, like a selling expense, like a office and administration expense, like a distribution expense, like a non monetary expense.
तो बिजनेस में कई ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट इन एक्सपेंसेस के बिना हम किसी भी गुड्स को इजीली सेल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस की नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट we establish the relationship between gross profit or loss with the all indirect expense, and after the preparation of profit and loss account we calculate the net profit or net loss of the proprietorship. If we are talking about the positional statement, so we can say that positional statement depicts the फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी पोजीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। इट मींस इट गिव्स द रिलेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इट मींस हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी कैपिटल है। ओके, और ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस शीट ऑफ बैलेंसेस। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट मींस शीट ऑफ बैलेंसेज which includes the balances of all the types of the assets, all the types of the liabilities and capital। यानी बैलेंस शीट क्या होती है? एक शीट होती है जिसमें हम सारे बैलेंसेस लिखते हैं। किसके किसके बैलेंसेस लिखते हैं? एसेट्स के बैलेंसेस, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो। कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं एंड कैप लायबिलिटीज के बैलेंसेस लिखते हैं, चाहे वो करंट लायबिलिटीज हो चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो। इट मींस बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस which includes all the balances of the accounts, whether it is a capital related to the capital, assets or liabilities. Okay, so this is a summary of the financial statement of sole proprietorship. So please note down in your copy. So you can see that what is the meaning of adjustment and what are the effect of the adjustment in the final account of the sole proprietorship, as well as we can see that what is the meaning of adjusting entries. Let's we move to the very important topic of this chapter, that is the important adjustment. What is the meaning of important adjustment? Please note down कौन कौन से स्टेट एडजस्टमेंट हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। इसको पहले हम एक समरी बना लेते हैं एंड देयर आफ्टर वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट सच काइंड ऑफ द एडजस्टमेंट। Okay, so please note down in your copy. First adjustment will be a closing stock. मैं पूरा नाम लिखवा दे रहा हूँ पहले, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आपके कोर्सेज में हैं और क्लोजिंग स्टॉक्स को कैसे एडजस्ट करना है, सब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, सब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, द सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड वन इज अ prepaid expenses। एडजस्टमेंट मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन अगर बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी, तो उसको हम कैसे एंट्री पास करके इफेक्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे फाइनल अकाउंट में, और इनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन। ओके, सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट, after the depreciation, the very important is interest on capital, interest on loan, interest on capital, interest on loan. Number 9 is
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद देयर आफ्टर वी डिस्कस अबाउट दी provision for bad and doubtful debts, provision for bad and doubtful debts. Number 10 is provision for discount on debtor. इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. हम 9 में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की जगह इसमें कई सारी चीजें जैसे बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये सब चीजें एक ही से रिलेटेड होती हैं. बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सब चीजें इंक्लूड कर ले रहा हूँ. ठीक है, तीन चीजें. नंबर 10, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, और इस पे कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन इज अ मैनेजर्स कमीशन, एबनॉर्मल लॉस. मैनेजर्स कमीशन, एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बाद वी डिस्कस्ड द चैरिटी सैंपल. इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यू नो वेरी वेल. चैरिटी सैंपल, यू नो, चैरिटी में हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, उसमें सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. उन सबका क्या इफेक्ट पड़ेगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट. एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर कोई है, किसी आइटम पे जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो उसको कैसे हम फाइनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे. इट इज अ जीएसटी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये नया टॉपिक है. हाँ, उसके बाद आपको डिस्कस करना है दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. सेल ऑफ गुड्स on approval basis, as well as 15 will be a amortization, depreciation and amortization, that is a written off of intangible assets. depreciation चैप्टर में पढ़ा है. depreciation को भी हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करते हैं. उसी तरह से amortization है, लाइक पेटेंट, गुडविल एंड ट्रेडमार्क को अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो उसका कैसे हम बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट में हम कैसे उनको इंक्लूड करते हैं, कैसे शो करते हैं. ओके, और कोई कोई भी बच गया हो, कोई भी एडिशनल. सो इतनी चीजें हमें पढ़नी है. बेसिकली दे आर बेसिकली 15 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट which will be discussed in this chapter, that is the financial statement of sole proprietorship with adjustment. So one by one हम इन सारे एडजस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, उसको हम कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और कैसे उसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में इनके इफेक्ट को शो करते हैं. ओके, प्लीज नोट डाउन. सो यू कैन सी दैट हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़ने हैं. हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स are to be required to prepare a financial statement with adjustment. There are basically 15 adjustment. So let's we discuss one by one adjustment with their effect, with their meaning, and with their adjusting entries. So the first adjustment which are included in the financial statement of sole proprietorship with adjustment, that is a closing stock. What is the meaning of closing stock? Please note down in your copy. Firstly, closing stock means a stock which are held unsold at the end of the year. कोई भी स्टॉक, कोई भी मटेरियल जो बिजनेस में साल के अंत में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिना सोल्ड हुए बच जाता है, that is known as the closing stock. So the first adjustment which will we have to study, that is a closing stock. So what is the meaning of closing stock? Please note down in your copy.
Closing stock means it refers to value of stock or value of goods unsold. It refers to the value of goods unsold at the end of an accounting year. Okay, so कोई भी गुड्स की वैल्यू जो बिजनेस में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास बच जाती है, अनसोल्ड रहती है, इट विल बी नोन एज द क्लोजिंग स्टॉक. इसका इफेक्ट कहां पड़ता है? इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So the effect of closing stock on financial statement are as follows. You know very well. The first effect of closing stock. पहला effect क्या होता है closing stock का? You know very well. Yes. The first effect of closing stock on financial statement is it will be credited in credit side in trading account. इसे हम लोग सबसे पहले कहाँ लिखते हैं? It will be shown in the credit side of trading account. Number second, it will be write down in the asset side of balance sheet. Asset side of balance sheet. So this is the first adjustment. यानी अगर सपोज किसी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बना के दिया है और ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो गिवन. सो इन दिस सिचुएशन क्लोजिंग स्टॉक एटलीस्ट दो जगह इफेक्ट पड़ेगा. क्लोजिंग स्टॉक का कितनी जगह इफेक्ट पड़ेगा? टू साइड्स, दो जगह पर इसका इफेक्ट पड़ेगा. द फर्स्ट इफेक्ट which are related to the closing stock is it should be credited in the trading account, and second it should be written in the asset side of the balance sheet. So this is the first adjustment, you know very well. The second adjustment, outstanding expense. That is outstanding expenses. So what is outstanding expenses? Please note down in a copy. Expenses which are due but not paid. कोई भी एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है, जिसे हमें पे करना तो चाहिए बट अभी हमने उसको पे नहीं किया, यानी एक्सपेंस which are due but not paid will be known as the outstanding expense. Okay, so what is outstanding expense? Expense which are due but not paid. Suppose सैलरी की बात करें, आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना था 10,000 इस महीने, बट आपने इस महीने वो सैलरी नहीं दी. सो इन द नेक्स्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ नवंबर, इट विल बिकम्स द आउटस्टैंडिंग सैलरी बिकॉज ऑफ आपको सैलरी देनी थी अक्टूबर में, बट आपने अक्टूबर में सैलरी नहीं दी, तो अक्टूबर की वो सैलरी जो आगे पोस्टपोन हो गई, इट विल बी नोन एज द आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द नवंबर मंथ. इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सो इसका इफेक्ट होता है, द फर्स्ट वन इज, प्लीज नोट डाउन, added in respective expense of added in respective expense in trading or profit and loss account. बेसिकली इसको ध्यान से समझिएगा. सपोज वेजेस, इफ वेजेस आर आउटस्टैंडिंग, सो वेजेस में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. इज दैट क्लियर? सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में वो वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी जिससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस तो कई तरह के होते हैं, सैलरी, वेजेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग. सो यू नो वेरी वेल. सो डायरेक्टिंग एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस को. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग कहाँ नोट डाउन करते हैं? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दैट्स व्हाई यहाँ दोनों का नाम लिखा हुआ है, ट्रेडिंग में या फिर पीएल में. सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ऐड तो होगा बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होगा, बिकॉज सैलरी हम कहाँ नोट डाउन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजिंग इज अ पार्ट ऑफ द
ट्रेडिंग अकाउंट, सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर वेजेस में ऐड हो। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसमें जो एक्सपेंस है वो किस नेचर का है, डायरेक्ट नेचर का है कि इनडायरेक्ट नेचर का है। अगर डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में जाकर ऐड होगा, और प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होगा। अगर वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगा, सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगा, रेंट है तो रेंट में ऐड होगा। दूसरा इफेक्ट सबसे कॉमन है, दैट इज अ यू नो वेरी वेल एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो कोई एक्सपेंस है जो ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं किया है, so it is your liability. That's why it will be shown in the liability side of balance sheet. Okay, I hope it is clear. Let's we move to the third adjustment. The third adjustment is prepaid expense. The third expenses is prepaid expense. So what is prepaid expense? Expenses which are not due. Expenses which are not due but already paid in advance. यानी वो एक्सपेंसेस जो ड्यू नहीं हुए हैं बट उसे आपने ऑलरेडी पे कर दिया एडवांस। यानी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, विच आर नॉट ड्यू बट ऑलरेडी पेड इन एडवांस। जो ड्यू नहीं हुआ था, सपोज आपने रेंट नवंबर मंथ का अक्टूबर में भर दिया, दिसंबर का अभी भर दिया, यानी करंट ईयर का जो आपका एक्सपेंस है वो तो आपने पे कर ही दिया, एज वेल एज आपने एडवांस भी पे कर दिया। सो इट विल बी नोन एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड, पहले पे कर देना। सो इट इज अ इट हैव अ अपोजिट इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब देना था बट आपने दिया नहीं, प्रीपेड मतलब नहीं देना था लेकिन आपने दे दिया। इट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट होता है, दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। सो दैट्स व्हाई इसका इफेक्ट भी जस्ट अपोजिट होता है। एज यू कैन सी दैट आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, बट इसमें क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, डिडक्टेड। ओके, सो इफेक्ट क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंस का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सो इफेक्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। नंबर वन इज deducted from respective expense in trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज अगर आपने रेंट प्रीपेड कर दिया तो रेंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट। सो पीएल अकाउंट से कितना माइनस हो जाएगा, जितना प्रीपेड है वो माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो क्या हो जाता, ऐड हो जाता। नंबर सेकेंड, यू नो वेरी वेल प्रीपेड एक्सपेंस इज अ, आपने पहले पे कर दिया, ड्यू था पे नहीं किया सो लायबिलिटी, ड्यू नहीं था आपने पे कर दिया सो इट इज एन एसेट्स। सो इट विल राइट डाउन इन द एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो आई होप इट इज क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच गई, वो है जर्नल एंट्रीज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, yes it is very important part. So you can see that closing stock, outstanding expense and prepaid expense का क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स we move to the adjusting entry, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका adjusting entries भी आपको पढ़ना है। तो adjusting entries क्या होंगी, तो मैं मेरे पास थोड़ा बहुत स्पेस है, हम उसमें आपको स्पेस में बता देते हैं। The first adjustment entry related to the closing stock is the entry will be closing stock account debit to trading account। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। ओके, सेकेंड द एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। यस, वेरी गुड, दैट इज द एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? ये पहले ही आप स्टार्टिंग में ही जनरल एंट्री के साथ आप लोगों ने स्टडी किया था। सर व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? So the entry is expense account debit to outstanding expense. And prepaid expense की क्या जनरल एंट्री होती है? You know very well. The prepaid expense की जनरल एंट्री होती है that is prepaid expense account debit to expense. Okay, because outstanding is a liability, so it will be credited.
prepaid is an asset, so it will be a debited. और आउटस्टैंडिंग से एक्सपेंस विल बी इंक्रीज, ऐड होता है, दैट्स व्हाई एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, और प्रीपेड से एक्सपेंस क्या होता है, डिडक्ट होता है, सो इट विल बी अ क्रेडिटेड. एंड इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट्स, एंड एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपर्ली, दिस दिस इज द फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट. ये सबसे पहला 3 एडजस्टमेंट है जिसे आपको ध्यान देखना है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे भी जाते हैं. यानी आप कोई भी फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन उठाकर देख लो इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसमें ये 3 एडजस्टमेंट तो रहते ही रहते हैं. इट इज अ कंपल्सरी, सो दैट्स व्हाई प्लीज see it carefully. Okay, so let's we take the one example for creating a better understanding regarding the outstanding expense and prepaid expense. Okay, suppose this is an trial balance. Suppose एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस आपके सामने मैं प्रेजेंट कर, जिसमें गिवन है कि वेजेस आपने पे किया है 2,10,000 और रेंट पे किया है आपने 50,000. ओके, दिस इज एन ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा एक्सपेक्टेड ट्रायल बैलेंस है, और इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवन. The information are the additional information which is also known as the adjustment, that is wages rupees 50,000 are prepaid, wages rupees 50,000 are prepaid, and rent rupees 10,000 are outstanding. Okay, so show these item in फाइनल अकाउंट, और आपसे कह रहा है कि आप इस आइटम्स को फाइनल अकाउंट में शो करिए. सो हम कैसे शो करेंगे, प्लीज सी इट वेरी केयरफुली. बेसिकली अगर हम बात करें, वेजेस 50,000 प्रीपेड है और रेंट 10,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है. तो सिचुएशन में वेजेस विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, वेयर इज द रेंट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का देखो, सो यू नो वेरी वेल पर्टिकुलर्स अमाउंट. वेजेस कहाँ लिखते हो सर, डेबिट साइड में, टू वेजेस, इनर कॉलम में लिखोगे 2,10,000 एंड प्लस वेजेस में क्या था 50,000 प्रीपेड, एंड प्रीपेड में हम क्या करते हैं, डिडक्टेड. प्रीपेड को क्या करते हैं, डिडक्ट. कितना प्रीपेड है, सो प्रीपेड विल बी अ 50,000. तो 2,10,000 में 50,000 माइनस हुआ, दैट इज 1,60,000. Let's be talking about the profit and loss account. If we are talking about the profit and loss account, because rent is a part of profit and loss account, so rent to rent, what is the amount of rent, that is a 50,000. Rent के regarding क्या दिया है, 10,000 are outstanding. तो outstanding को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना है 10,000. सो पीएल अकाउंट में कितना शो होगा, 10,000. यू कैन सी दैट प्रीपेड को डिडक्ट करते हैं ट्रेडिंग या पीएल से, तो प्रीपेड जो था ट्रेडिंग से रिलेटेड था, बिकॉज वेजेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड रेंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल, दैट्स व्हाई पीएल में दिखेगा रेंट, और आउटस्टैंडिंग है, सो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी में दिखाते हैं बैलेंस शीट की, और प्रीपेड को किस में दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में. सो व्हेन वी प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, जब हम एट लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो वहां थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, सर कौन सी वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे. सो जो प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग की वैल्यू वो शो करेंगे. जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट, तो 10,000 आउटस्टैंडिंग का पार्ट दिखाएंगे, और प्रीपेड का कौन सा पार्ट दिखाएंगे, सिर्फ प्रीपेड वाला, दैट इज अ प्रीपेड रेंट, सॉरी प्रीपेड वेजेस 50,000. Because prepaid is an asset, so it will be shown in the asset side of the balance sheet. Outstanding is the liability, so it will be shown in the liability side of the balance sheet. So इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में you can see that हमने तीनों चीजें बनाई फाइनल अकाउंट का, that is trading account, profit and loss account and balance sheet, and we can see that how we will show the effect of these adjustment in the final account. कि trading account में wages
प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, पीएल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, सो I hope it is clear for you. Please note down in your copy. This is a very important example for you. इससे रिलेटेड हम लोग जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं. सपोज अगर इफ एनी क्वेश्चन is asking about the passing the adjustment entry, so we can see that कि wages 50,000 are prepaid. तो उसकी एंट्री क्या होगी? That is a prepaid wages account debit to wages. What is the amount of prepaid value? That is 50,000. So the journal entry of regarding the prepaid wages are this. ये पहली journal entry होगी. अगर क्वेश्चन में adjustment entries भी पूछता तो. Number second, rent rupees 10,000 are outstanding. So you know very well what is the entry of outstanding rent. So the entry will be rent account debit to outstanding rent. That is a 10,000. Okay. So I hope it is clear for you. Please note down. Firstly, we prepared the extract format of the trading account, profit and loss account, and balance sheet, and thereafter we will also pass in this question the adjusting entries. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and take care.